Hello guys, I am social media. Here all topics for medical laboratory technician is here. So let us play the video. Today topic is Enterobacteriaceae family and E. coli. Enterobacteriaceae. Introduction. It is a gram-negative bacilli, non-spore forming, non-acid fast organism. It is commonly present in large intestine. दोस्तों ये ग्राम नेगेटिव बैसिलाई होते हैं नॉन स्पोर फॉर्मिंग जिसमें स्पोर्स नहीं बनते एंड नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं. इट इज़ कॉमनली प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फैमिली ऑफ ऑर्गेनिज्म. सम आर नॉन पैथोजेनिक एंड फ्यू आर हाईली पैथोजेनिक. तो दोस्तों ये एक कॉम्प्लेक्स फैमिली के ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें में से कुछ नॉन पैथोजेनिक और कुछ हाईली पैथोजेनिक होते हैं. Basic characteristic of Enterobacteriaceae family. All Enterobacteriaceae are gram-negative bacilli and non-spore forming. दोस्तों सभी इंट्रोबैक्टीरियोसी फैमिली के ऑर्गेनिज्म ग्राम निगेटिव बैसिलाई होंगे और नॉन स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म होंगे. ऑल ऑक्सीडेज निगेटिव होंगे दोस्तों. ऑल कैटलेज पॉजिटिव होंगे. ऑल रिड्यूस करेंगे नाइट्रेट को नाइट्राइट में. All motile except sigilla and Klebsiella. All non-capsulated except Klebsiella. All non-fastidious grow on bill-containing media, for example McConkey agar. Classification of Enterobacteriaceae family. So Enterobacteriaceae family divided into three groups: lactose fermenters, second late lactose fermenters, and third non-lactose fermenters. First, lactose fermenters, a bacteria which ferment lactose called lactose fermenters. Late lactose fermenters, a bacteria which ferment late lactose is called late lactose fermenters. Non-lactose fermenters, a bacteria which cannot ferment lactose. So lactose fermenters, there are four bacteria: Escherichia Coli, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter. In late lactose fermenters, there are only one bacteria, for example Shigella sone. Non-lactose fermenters, in this group there are three bacteria: Salmonella, Proteus, and Yersinia. There are several selective and differential media used to isolate distinguish between lactose fermenters and non-lactose fermenters. The most important media are McConkey agar, EMB agar, Salmonella Shigella agar, in addition to triple sugar iron agar. दोस्तों हमारे पास कुछ सेवरल सेलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडिया हैं जिसका हम यूज़ करते हैं लैक्टोज फर्मेंटर्स और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. फॉर एग्जांपल मैकोंकी अगार, EMB अगार, SS अगार एंड TSI अगार. Edward-Ewing classification. In Edward-Ewing classification, all Enterobacteriaceae are divided into four tribes. In tribe 1 called Escherichia, there are 5 genus in tribe 1. A. Escherichia, B. Edwardsella, C. Citrobacter, D. Salmonella, and E. Shigella. In tribe 2 called Klebsiella, there are 4 genus. A. Klebsiella, B. Enterobacter, C. Hafnia, and D. Serratia. In tribe 3 called Protei, there are 3 genus: Proteus, Margonella, and Providencia. In tribe 4 called Erwinia, genus Erwinia. Now we will discussing about Escherichia coli and E. coli. It is first described by Escherichia in 1885. Normal flora, intestinal tract of human and animal, and also found in water and soil. Other species of Escherichia are less important. For example, Escherichia fergusoni, Escherichia harmony, Escherichia vulneraris. Special characteristic for Escherichia coli. It is a gram-negative bacilli, aerobic and facultative anaerobe. It is non-spore forming bacteria. It is thermotolerant. It contains capsule, Petroticus flagella, and fimbriae are found in some strain. Special characteristic for E. coli is thermotolerant, means it survives high temperature. Now we will discussing about cultural characteristic for E. coli.
It is aerobic and facultative anaerobe. Temperature range for growth is 10 to 40 degrees Celsius. Optimum temperature is 37 degrees Celsius. It shows S and R variation, smooth and rough. फ्रेंड्स एस को काट कर आर कर लीजिएगा. कल्चर मीडिया इन न्यूट्रिएंट agar it show translucent and smooth colonies. In blood agar beta hemolytic colonies are showing. In McConkey agar bright pink colonies are showing. In broth agar turbid is formed. In E. coli. Biochemical reaction for E. coli. Indole test and MR test are positive. Both are positive. Sucrose test, citrate test, VP test and urease test all are negative. 7. It ferments sugar like glucose, lactose, maltose, mannitol and maltose etc. with acid and gas production, but it is not fermented sucrose. दोस्तों ये शुगर को फर्मेंट करता है लाइक ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज विथ एसिड एंड गैस प्रोडक्शन के साथ, बट ये सुक्रोज को फर्मेंट नहीं कर पाता, इसीलिए सुक्रोज टेस्ट निगेटिव है. वायरुलेंस फैक्टर ऑफ ई. coli. वायरुलेंस फैक्टर मीन्स अ फैक्टर विच निक इन द होस्ट. जो फैक्टर किसी सेल्स को अफेक्ट पहुंचाता है दोस्तों, उसी को बोलते हैं वायरुलेंस फैक्टर. सो इन ई. coli देयर आर सेवरल वायरुलेंस फैक्टर, फॉर एग्जांपल कैप्सूल, फ्लैजिला, पिली, सोमैटिक ओजी, लिपोपॉलीसेकेराइड, कॉज डायरिया. टॉक्सिन्स में दोस्तों इंट्रोटॉक्सिन, हेमोलाइसिन, CNF1. Now clinical infection of E. coli. First, urinary tract infection, diarrhea, septicemia, biliary tract infection and meningitis. Types of diarrhea. There are 6 types of diarrhea. First, enteropathogenic E. coli. Second, enterotoxigenic E. coli. Third, enteroinvasive E. coli. Fourth, enterohemorrhagic E. coli. 5, enteroaggregative E. coli. 6, enteroadherent E. coli. Now we will discussing lab diagnosis for E. coli. Specimen: pus, stool, urine, CSF, cerebrospinal fluid, blood and sputum can be collected. Direct microscopy. In direct microscopy we perform gram staining. Gram staining show gram-negative bacilli. Culture we taught previously, but common are nutrient, blood agar and CLED agar.